सबको नमस्ते. Thank you very much for all of you for sparing your time and coming to meet with us this evening. Unfortunately, we got a little delayed at the airport, hence the delay. But we are all very, very happy to be here, and we are very proud to see so many Indians away from home doing extraordinarily well in South Africa today. So it's really an honor for all of us to be here. It's a delegation which was a program decided by the Honorable Prime Minister. माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ भारत और पाकिस्तान तक सीमित न रहे, लेकिन देश को पता होना चाहिए कि भारत में क्या हो रहा है और जो सत्य है वो बाहर जाना चाहिए. इसलिए 7 ग्रुप्स बनाए गए. उसमें से एक ग्रुप हमारा है. इसमें देश के बड़े वरिष्ठ नेता है सारे. यहाँ इस टीम में बाहर 5 ऐसे वरिष्ठ भारत के नेता हैं जो मंत्री भी रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे और बहुत साल उन्होंने भारत की सेवा की हुई है, तो बड़े अनुभवी है. तो दिस डेलीगेशन इज एन एक्सट्राऑर्डिनरीली एक्सपीरियंस्ड लीडर्स. 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स who have served India are on this delegation, and I'm sure you're all eager to hear each one of them. We will, each one of us, speak for 3 minutes, and I'll try not to repeat points so that we bring in the truths to you. You have followed a lot of the entire Pahalgam story. I saw the little exhibit that has been put out. It's the most traumatic and painful experience that we have all been through. And there are 2 couples who are unfortunately from my constituency, and when I met both the families, both the women, every time I meet them, say just one thing to me, कि इतने दिन हुए लेकिन जब भी आंख बंद करते वही घटना, वही बंदूक, वही चेहरा और डर अभी मन से नहीं गया. So a lot of people's lives have got completely disrupted, and they were innocent people, innocent Indians who had just gone to celebrate a few days in Kashmir, which is fortunately doing extraordinarily well. So many tourists there, the economy has improved, and suddenly this attack on India's soul. So we are deeply pained by it, but I appeal to every Indian citizen here that you must tell the truth to the world, and we all in one voice must condemn any terrorism anywhere in the world. And we have come with a message of peace, love, harmony. At the same time, we must not forget that India is not going to tolerate any violence against any Indians anymore. And that's the message that we have come. Our first effort will always be peace. And India is one country which has never initiated a war ever. So we stand by that, and I would request my each colleague to come up with something that we really need to communicate. And I'm sure each one of you will take this message of peace, but peace not at the cost of losing our hard-working, clean souls. So that's the message we are driving, and we are totally disappointed because the whole idea of the neighborhood was when Honorable Prime Minister Modi took oath in 2014. We invited every neighbor for the oath ceremony because we wanted to send a message that we want the continent to be peaceful and happy, and we want to grow together. But unfortunately, with this Pahalgam incident, it hasn't happened. It's shaken each Indian everywhere in the world. And I'm so happy that South Africa, the government has stood by India, and they have joined hands with us for zero tolerance against any terrorism. So I'm sure each one of you will take this message of peace forward for India. And I'm really happy and proud to meet so many of you here. I'm sure it's not easy to live away from home, but it's a chance for all of us together to reminisce some memories, and we look forward to spending a wonderful evening. We will share some of our stories, and we'd like to hear some of yours as well. So I thank the MEA, the Honorable Prime Minister's Office, and all my esteemed colleagues who are on this delegation, and I'd request Anand Sharma ji to give us his words. Thank you very much. इस सभा में उपस्थित हमारे भारतीय मूल के भाइयों बहनों और नौजवान साथियों, आपको उद्देश्य बता दिया गया किस वजह से हम लोग यहाँ हैं. पूरे विश्व को असली तस्वीर दिखाने के लिए कि क्या घटनाक्रम हुआ
भारत के लोगों की पीड़ा और आक्रोश बताने के लिए और ये भी कहने के लिए कि आज के विश्व में आतंकवाद का कोई स्थान नहीं है जिसमें बेगुनाह निहत्थे लोगों की हत्या हो, तकलीफ हो। ये पहली बार वाकया नहीं, लंबे समय से, दशकों से भारत पर हमले हुए हैं। India has been a targeted victim. There have been attack on Indian Parliament. You are aware of the Mumbai terror attack, where citizens of the world died. And it's very clear that the terror groups are based in Pakistan, nurtured, sheltered, protected. We don't have to grip any more evidence which has been there. The world has seen wherever the major terror attacks have taken place, somewhere the Pakistan's name props up, the signature is there. We have the terrorists who had attacked Mumbai. Finally, one of them has been extradited to India. The world knows where Osama bin Laden was found. Abbottabad, Pakistan. I don't have to go into the details, but to say that Indian security forces and the government had acted with utmost restraint. We had only, our forces had targeted the headquarters of the terror groups. It was unfortunate that Pakistan did not pay heed. Instead of taking action, attacked Indian air bases, and there had to be a forceful Indian retaliation. India is a peace-loving country, as Supriya has said. We are a land of Gandhi, and we are here with a land of Nelson Mandela, land of people who had stood up for human dignity, freedom, and for peace. And Indian community, Indian diaspora has been in the forefront. It has given front-ranking leaders to the anti-apartheid struggle. I've had the honor and privilege to have known the leadership here, both of the Indian community and the African National Congress. And the greatest honor of my life has been to have known Madiba personally, and the others in the leadership. You people understand the issues well. We have just come to share with you what Indian people have been through and what India's resolve is. I'm going to stick to the time and not say much. आप सबको मेरी शुभकामनाएं, आपको, आपके परिवार को। जय हिंद। तिवारी जी। प्रभात कुमार जी, मंच पर विराजमान बहुत ही हमारे अति वरिष्ठ साथी और इस सभागृह में उपस्थित सारे ही महानुभाव, सबसे पहले तो मैं आप सबका और भारत के दूतावास का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सबसे मुखातिब होने का आज अवसर प्राप्त हुआ। भारत एक बहुत ही प्राचीन संस्कृति है। 5000 साल लंबा हमारा इतिहास है और भारत की ये परंपरा रही है कि उसने सदा अहिंसा और शांति में विश्वास किया। भारत एक ऐसा मुल्क है जिसने कभी किसी और मुल्क के ऊपर आक्रमण नहीं किया और भारत ने जब भी
कहीं पर हस्तक्षेप किया है तो लोगों की जो इज्जत है, उनके जो मानवाधिकार हैं, उनकी हिफाजत करने के लिए हस्तक्षेप किया है। चाहे वो 1971 पूर्वी पाकिस्तान में हो, जब बांग्लादेश की संरचना की गई थी। ये वो पृथ्वी है, ये वो धरती है जहां पे महात्मा गांधी जी ने अपनी रणनीति को सुरखरू किया था। अहिंसा से उन्होंने एक ऐसे साम्राज्यवाद को शिकस्त दी थी जिसके बारे में कहा जाता था कि ब्रिटानिया लहरों पर राज करता है, द सन डजंट सेट इन द ब्रिटिश एम्पायर। और आज महात्मा गांधी जी की, नेल्सन मंडेला जी की इस धरती को मैं नमन करता हूं। हमारा यहां आने का उद्देश्य ये है कि सारी दुनिया को हम ये बताएं कि if the world has to grow, and if the world has to grow peacefully, and people have to progress, and they have to have a better life for themselves, their families, and for the generations to come, then violence cannot be a sequitur in that equation. Terrorism has no religion. Terrorism has no other manifestation. Terrorism is a pure evil which has to be exorcised from the body politic of this globe. And that is why, after this horrific attack in Pahalgam, where 26 of our citizens were executed in cold blood, we are reaching out to the global community to create a global consensus against those nations which use terror as an instrument of state policy. India has always believed in a peaceful neighborhood. We continue to believe in a peaceful neighborhood, but we will not and cannot tolerate terrorism which is being sponsored by Pakistan, now going back 45 years. And therefore this multi-party delegation seeks to underscore that solidarity and would like to appeal to you to also reach out to all the people that you know around the world and help us in creating this international consensus whereby the world can grow peacefully and the dream of Vasudhaiva Kutumbakam, the world is one family, can actually come true. Thank you very much. Here to South Africa, Sri Prabhat Kumar ji, the leader of the delegation, other esteemed members of the delegation, and the esteemed members of the Indian Diaspora and the community who have gathered here. Friends, as it has been already explained by the leader and other members of the delegation, we are on a tour of a 4-nation tour, and this is the second leg of that tour. We completed Qatar in the last 2 days and just landed in Johannesburg almost 1.5 hours ago. And next 2 days we will be in Cape Town and Johannesburg, meeting and interacting with the leadership of South Africa, with the members of the civic society. And I'm delighted that we are starting our engagements with an interaction with the Indian community here. As the Minister of State in the External Affairs Ministry during the last 5 years, I had the opportunity to travel extensively in this region. Almost I would have covered around 30 countries of Africa during the last 5 years. And I'm aware of the efforts
that Indian community has put in during the last so many decades. So I must congratulate all of you for your efforts, for your achievements, and the way you have contributed to the society to which you belong, both in your place where you are working as well as to our motherland, India. So in that sense, you have all made India proud by your achievements and your efforts. Our Prime Minister Narendra Modi ji has always been maintaining that the diaspora is the living bridge of India to the world. And in that sense, you have a major role to play. See, terrorism is a global menace. Every country in the world is subjected to that. But for India, the terrorism that we find in India, I can say that it's something different from the rest of the world. Perhaps India will be the only country where we are subjected to state-sponsored terrorism. A country, neighboring country, who supports, who trains, who finances and sends over terrorists to India to create violence, to subject innocent citizens to tyranny. That's the problem that India is facing. So that's why the Prime Minister and the government, all parties together, have decided that we have to make the whole world, sensitize the whole world, the global community about the menace of terrorism. The world has to come together in one voice against this menace of terrorism. And I would request every one of you to be party to that efforts, to come in unison, spread this message that any act of terrorism will be against the progress of the humankind. So with these words, let me conclude. Namaskaram to all of you. Prabhat Kumar ji, leader of the delegation Supriya Sule ji, my learned colleagues on the dais, ladies and gentlemen, namaskar, a very good evening to all of you. Let me first thank each and every one of you for taking out your precious time and to meet us tonight and to convey the message very loud and clear to the entire world that we stand together against terrorism. तो ये संदेश हम सब ने देना है कि आतंकवाद के खिलाफ हम सब एकजुट होकर खड़े हैं। अगर आप सब आतंकवाद के खिलाफ हैं तो मेरे साथ बोले भारत माता की, दोनों हाथ ऊपर करें, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। साथियों, जो पहलगाम में हुआ वो दुखद था, दर्दनाक था और मैं तो कहूँगा मानवता को शर्मसार करने वाला था। धर्म के आधार पर लोगों को चुना गया, छोटे छोटे बच्चों के आगे उनके पिता को 1 फुट की दूरी से सिर पे गोली मार दी गई, पत्नी के सामने पति को मार दिया, किसी के भाई को, किसी के पिता को मार दिया। और ये किसने किया? इसकी जिम्मेदारी ली है द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो लश्कर तैयबा का फ्रंट है और पाकिस्तान की सरजमीन से जो जन्म भी लेता है, प्रशिक्षण भी लेता है, पैसा भी लेता है और भारत और दुनिया भर में आतंकवाद फैलाने का काम कोई करता है तो उस देश का नाम है आतंकवाद फैलाने वाले के देश का नाम है पाकिस्तान। यही आपको सारी दुनिया को बताना है कि आतंकवाद फैलाने का काम पाकिस्तान की सरजमीन से होता है।
जब पाकिस्तान ने 15 दिन तक इस पे कुछ नहीं किया, तो फिर जो भारतीय सेना ने किया वो अपने आप में कमाल था कि ऐसे 9 आतंकवादी ठिकानों पर प्रहार किया कि उनको भी कहने पड़ा कि 10 लोग चले गए, साथ में मैं भी चला गया होता तो ठीक ही होता। जब कोई परिवार का व्यक्ति अपने सदस्य को खोता है तो इससे बड़ी क्षति कोई नहीं होती, लेकिन ये एक के बाद दूसरा प्रहार पाकिस्तान की सरजमीन से आतंकवादियों ने भारत पे किया है। और भारत ने लगातार शांति का संदेश, दोस्ती का संदेश देने का प्रयास किया। भारत ने एक ही बात कही है कि हम किसी को छेड़ते नहीं, और कोई अगर हमें छेड़ता है तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। आप तो सब जानते ही हैं। बस ये सारी दुनिया तक पहुंचाना है अपनी भाषा में, अपने शब्दों में, that India has made it stand very clear that we have a zero tolerance policy against terrorism. और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, टॉक एंड ट्रेड कांट गो टुगेदर, तो टॉक एंड टेरर कांट गो टुगेदर, ट्रेड एंड टेरर कांट गो टुगेदर, एंड ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर। स्पष्ट संकेत है। मैं इतना ही कहूंगा कि पाकिस्तान दुनिया का शायद इकलौता ऐसा देश है कि यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल की जो लिस्ट है आतंकवादी संगठनों की और आतंकवादियों की, इंडिविजुअल और एंटिटीज की 1 2 6 7, उस लिस्ट में जो 52 एंटिटीज के नाम लिए गए हैं, इंडिविजुअल और एंटिटीज के, वो सारे के सारे पाकिस्तान के हैं, उससे संबंध रखते हैं। भारत और पाकिस्तान पिछले 75 वर्षों में कहां से कहां पहुंचे। आज हम सब भारतीयों को एक बात का गर्व होना चाहिए कि हम पिछले कुछ वर्षों में, 10 वर्षों में 10वें नंबर से बढ़कर आज दुनिया की 4th लार्जेस्ट, चौथी बड़ी इकोनॉमी हो गए। हम इकोनॉमी में आगे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान आतंकवाद बढ़ाने में आगे बढ़ रहा है। हमने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया, तो पाकिस्तान ने और गरीबी में धकेलने का काम किया। मैं इतना ही कहूंगा, हमें अपने प्रयास भारत के विकास के लिए करते रहना है। आप सभी भारतीय जो देश से बाहर आए हैं, भारत के एम्बेसडर के रूप में काम कर रहे हैं। आपके ही मेहनत, आपकी ईमानदारी आज भारत की पहचान बनी है। हम कतर में थे तो वहां पे भी सबसे बड़ी संख्या किसी की है तो 8,30,000 हिंदुस्तानी वहां पर रहते हैं। आज मैं साउथ अफ्रीका में आया हूं, जहां नेल्सन मंडेला जी की भूमि है और महात्मा गांधी जी के देश से आया हूं, तो हम यही कह सकते हैं यहां पर भी हर भारतीय ने भारत का नाम रोशन ही किया है, आगे भी करेंगे। मैं इतना ही कहूंगा बस अंत में, क्योंकि भारतीय सेना जिस पर हम सबको गर्व होना चाहिए, पाकिस्तान की ओर से चाहे मिसाइल आई, लड़ाकू विमान आया, या फिर आजकल तो ड्रोन भी छोड़े जा रहे थे, एक को भी अपनी सरजमीन पर नहीं आने दिया, हवा में ही उनको खत्म करने का काम किया। मेरा आप सबसे अंत में इतना ही निवेदन है, आप सबको भी इस संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। पाकिस्तान के असली टेररिज्म वाले चेहरे को दुनिया भर के सामने लाना है। अलग थलग वो पड़ जाए और हम एकजुट होकर भारत का संदेश दुनिया भर में पहुंचाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। नमस्कार। अब थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। हमारे वरिष्ठ लवू हैं जो आंध्र प्रदेश से हैं, अनुराग हिमाचल से, सनी साहब पंजाब से, मनीष तिवारी चंद, आनंद शर्मा हिमाचल प्रदेश से, और हमारे मुरलीधर जी केरल से, और मैं बिहार से, और ये भारत आपके सामने यहाँ बैठा है। और तो कई बार हम लोग बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम एपोलोजेटिक हैं, लेकिन मैं सिर्फ
2-3 बातें रखूंगा। पहला कि अब हमारे खिलाफ कोई आतंकवादी गतिविधि करेगा तो हम उसका डट के जवाब देंगे, इसमें कोई संकोच भारत नहीं करेगा। दूसरा है कि अगर पूरी दुनिया को पाकिस्तान ये समझाना चाह रहा है कि हमारे पास परमाणु ताकत है, तो भारत इस परमाणु ताकत के इस भय को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और ये संवाद स्पष्ट है। और तीसरा, भारत आतंकवादी देश और जो आतंकवाद को बढ़ाता है उसमें कोई फर्क नहीं करेगा, ये सीधा संवाद है। और आप लोगों से यही संवाद है कि आप जहां बैठे, जिनसे बात हो, हमारे लिए चुनौती है कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है, आतंकवाद को पनाह देता है और भारत उसे अब कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये संवाद बिल्कुल स्पष्ट है जहां तक भारत का सवाल है। और जहां तक पाकिस्तान आतंकवादी है, आनंद शर्मा जी ने कहा, हमें प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। अगर अमेरिका सबसे बड़ी ताकत माना जाता है तो दुनिया में, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और उसके ऊपर जो 2001 में जिस प्रकार से जो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी माना गया, आतंकवाद के प्रहार के बाद वो पाकिस्तान में छिपा हुआ था और पाकिस्तान में ही अमेरिका के फौज ने उन्हें उसे ढूंढ निकाला और मार गिराया। तो हमें प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, हमारी लड़ाई चलेगी। और सिर्फ हम ये बताने आए हैं कि हम भारत पूरी तरह से तैयार है, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और पूरी दुनिया को हम एकजुट करने आए हैं कि आप सब भी आतंकवाद के खिलाफ, चाहे वो भारत के भीतर हो या दुनिया के किसी कोने में हो, उसके लिए एक स्वर, एक आवाज के साथ आप खड़े होंगे। यही हमारा आपसे अनुरोध है, यही अभिवादन है। धन्यवाद। मैं टाइम रख रहा हूं सबका। श्री लवु श्री कृष्ण। Leader of our delegation, Supriya ji, and honorable colleagues, and Indian Diaspora coming from all the states settled here. Warm welcome to all of you. And this is the first time that I've been in South Africa, and I'm very happy that I'm here, the land that birthed the idea of Indian freedom movement, and I'm really, really happy to be here. And if you see the delegation also, I'm the junior most in this delegation, and all of them, 5 of them are ex-ministers, central ministers, and it is led by someone, Supriya ji, who is from the opposition. But when we are outside the country, when representing the country, this is what India is all about. We are all united. This is the message we want to take. I've been given only 3 minutes, already 1 minute is over, so I have only 2 minutes left. This is almost like a 0 hour, so I'll try to use it properly. There are only 3 points that I want to make. The first one is with regards to the, there's so much of, in this conflict, there's so much of news that has been created, and we might read, but we won't be totally assessing it in a focused manner. So I would just want to give this detail with regards to the new Indian defense doctrine. Earlier, Indian defense was about maintaining the security of the country, but with this we have made it clear that Indian defense is not only about security of the country, but also eliminating the terrorists and whoever is sponsoring these terrorists anywhere in the world. This is the change that has happened. The second one was with regards to this delegation. This is what we have done, what has happened in Pahalgam, and what is the aftermath of that, the conflict and everything. The delegation's responsibility is we are going and meeting various ministers, academicians, think tanks, and explaining them and telling them this is what India has taken up with after the Pahalgam has happened, and this is what we are going to do in further also. That is what we have been explaining. And third thing is, as a diaspora, and final thing with regards to diaspora, that we request you, because you have been very plugged in with in the society in South Africa and everything. So we want you to make sure this message has been clearly taken forward,
And more importantly, there are so many fake narratives. I don't know about here, but when Qatar, we have been hearing all of that. So you have that access to various offices. So wherever possible, please try to take it up, because it's easy to send a fake message, fake narrative across. But for a country like India, which has a lot of checks and balances, for us, it's very difficult to negate that. As a diaspora, you have that, in your hand to negate that. So please try to do it as much as possible. Thank you very much. Shri Vikramjit Singh Sahani ji. Honorable High Commissioner of India and leader of the delegation, and my dear my earlier senior colleagues and mentors like Anand Sharma ji have told, India, this is a land which transformed Mohan Chand Karamdas Gandhi into a Mahatma. This is a land, and we are all the torch bearers, and we are continuing, and India is supporting, advocating, practicing the policy of non-violence, which was given birth on this land as a answer to the great apartheid movement. I would just like to add a different dimension to the whole thing. आप सबको पता ही है, लेकिन फिर भी मैं अपनी ड्यूटी समझता हूं कि भारत ने, इंडिया have been advocating peace and prosperity in South Asian region. I will like to reiterate that when Atal Bihari Vajpayee ji was the Prime Minister, in 1999 he led a friendship delegation to Lahore. I happened to be there, the big Lahore declaration, and फिर क्या हुआ, 1-1.5 महीना ही बीता तो कारगिल हो गया, फिर 2 साल बीते, छत्ती सिंहपुरा में 27 सिखों को शहीद कर दिया गया बेगुनाह, 26/11 हो गया, होता रहे। फिर भी हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बहुत एफर्ट करी, बहुत ट्राई किया, उनको बुलाया आगरा। फिर नरेंद्र भाई मोदी जी ने, वो अफगानिस्तान गए थे, कोई प्रोग्राम नहीं था, जब उनको पता लगा कि वहां के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जी के घर कोई सेलिब्रेशन है, तो अनशेड्यूल्ड, एक प्राइम मिनिस्टर, एक हेड ऑफ स्टेट, अनशेड्यूल्ड विजिट पे वो वहां लाहौर रुके और फिर वहां उनको बधाई दी और किया। ये ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल है। फिर ट्रेड की बात हो रही थी, मनीष जी कह रहे थे, जब आनंद शर्मा जी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, आई हैपन टू बी द चेयर ऑफ सार्क CCI, हमने वाघा खुलवा दिया, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बना अटारी वाघा पे, हम हर साल वहां जाते भी थे बसंत पे। 99% लोग वहां भी अमन अमान चाहते हैं, लेकिन बस दे आर हाईजैक्ड बाय द वेरियस नॉन स्टेट एक्टर्स। एंड तो ये हमें मैसेज आप सब ने, साउथ अफ्रीका तो हमारा इंडिया का एलाई है और बहुत ज्यादा नॉन वायलेंस के प्रति आवाज उठाता है, लेकिन फिर भी जो ये नरेटिव थोड़ा सा सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे चलता है, वहां इट इज द ऑनेस्ट ड्यूटी ऑफ ईच वन ऑफ योर गुड सेल्व्स टू सेट अप द करेक्ट नरेटिव कि देखिए इंडिया इज बीइंग पुश्ड अगेंस्ट द वॉल। तो हम क्या करें जब आप बेगुनाह लोगों को, भारतीयों को, किसी को टारगेट करते रहेंगे, हर चौथे दिन मारते रहेंगे, तो अब इंडिया क्या करे? और इंडिया हैज मेड क्लियर। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब न्यूक्लियर का किया तो उन्होंने खुद ही लिखा, उनको बोला थोड़ा, उन्होंने खुद ही लिखा नो फर्स्ट यूज। वो हमें रोज गिदड़ धमकी जिसको कहते हैं वो देते रहते हैं कि जी हमारा न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर है। अब भारत इन गिदड़ धमकियों से डरने वाला नहीं है। इंडिया विल नेवर यूज, इंडिया विल नेवर अटैक एनीबॉडी, बट इंडिया हैज टू डिफेंड इटसेल्फ। इंडिया हैज टू डिफेंड its ideology, its ethos, and a government is defending, is committed to defend each and every Indian. And lastly, नेल्सन मंडेला का आपको कोट याद होगा, उनका एक फेमस कोट है कि we have inherited this land from our ancestors
And it is our moral duty to hand it over to our younger generation in a much better form than we inherited. तो जो हमारा पड़ोसी मुल्क कर रहा है वो अपने नौजवानों की, मैं तो समझता हूँ अपने नौजवानों की कब्र वो पहले खोद रहा है कि is this the way they will hand over the country to the younger generation. तो आइए आखिर में थोड़ा हम माहौल बनाते हैं और थोड़ा देशभक्ति की 4 लाइनें मैं गाता हूं, आप सब क्लैप करिए। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, माए रंग दे, माए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान से, जिस पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन से, आज उसी को पहन के निकला, हमारा टोला भी ये पहन के निकला है बसंती चोला, देश भारत का मैसेज। आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। Ambassador Syed Akbaruddin ji. High Commissioner Shri Prabha. It's always a difficult act to follow, Shri Sani. I don't know because I'm only a diplomat. I can't regale you and enthuse you in the way he did. But having said that, I want to mention that India and South, you are all today following a tradition of deep friendship between India and South Africa. And by that, I don't mean only people to people, but also in the diplomatic field. I don't know how many of you know, but when the apartheid regime was here, India was the country which allowed South Africans to work as diplomats in the Indian mission to the United Nations, asking for fighting against racial discrimination. So South Africans became Indian diplomats, and we fought together in the trenches in the world of diplomacy. India, diplomatically, was also the country which gave up many occasions at sporting laurels. I don't know whether some of you remember, but there was a Davis Cup final where we refused to play because South Africa under the apartheid regime was there. So we gave up our only chance of winning the Davis Cup for South Africa. Finally, cricket is a passion for all of us. The only country before now that we refused to play was apartheid South Africa. Why I'm raising this is now we are refusing to play cricket with another country. And you need to understand the depth of our engagement and our revulsion of why we are doing this. Yes, it led to, this terrorist act led to a loss of large number of lives. Yes, but it was much more. We see this as an act of undermining our social cohesion, as was just told. We are a pluralistic country with diversity as our signature.
yet we saw an attempt to undermine that social cohesion. More importantly, we see this as an attempt to undermine our economic momentum. India and Pakistan both started together as midnight's children. Today, our economy is about 10x or more their economy. In fact, the economy of Maharashtra is perhaps larger than the economy of Pakistan. And so we see this an effort of a country to undermine our economy. Our goal is very clear. By 2047, we want to be Viksit Bharat, a country which is a developed country. On the other hand, there's a country which hasn't kept pace with the times and it is falling back. It's trying to pull us. And finally, it is also a threat to our democratic ethos. We just had elections in Kashmir. By all accounts, a very fair election. The government had settled in there. They were moving in the right direction, and this was an attempt to undermine them. So please understand, this is a broader attempt than a one assault on our people. And that's why the revulsion among us, that's why this all of society approach that we have taken. We have come here, and if I may summarize quickly, with 3 goals. 1, that we are all united. This reflects solidarity of India. 2, that there are some red lines, these have been indicated, and we will communicate this to every society we go in. And 3, that we are on a mission of prevention in a preemptive manner. We know that this may happen again, so we want to sensitize everyone that should this happen again, please be warned what the consequences will be. And what we want all of you to do is to join in communicating these messages. You are all have done outstandingly well. Please join us in this mission to communicate. Thank you very much for your